Hello everyone, my name is Amit and I am from GS Faculty NCA. Today we will discuss the previous year questions of NDA and CDS and CAPF of the topic Physiography of India. So आज हम क्वेश्चंस देखेंगे जो लास्ट ईयर्स में आपके आए हैं और उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन दोबारा भी आने वाला एग्जाम जो एनडीए 1 है 2025 एंड सीडीएस 2025 उसमें वो क्वेश्चंस दोबारा भी उन्हीं टॉपिक में से आ सकते हैं। सो आज हम वो क्वेश्चंस देख रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया? फर्स्ट इज धौलागिरी, सेकंड इज नामचा बारवा, थर्ड इज कामेत एंड फोर्थ इज मकालू। Select the answer using the code given below. Option A 1, 2, 3, option B 1 and 3 only, option C 2 and 3 only, and D is 2 and 4 only. Now we will see that this question is directly from our sources. जैसे हमारे नोट्स में से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, जैसे आपका यहाँ आपकी लिस्ट है, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है आपका, कंचनजंगा इंडिया में है आपका, मकालू इज इन नेपाल, धौलागिरी इज ऑल्सो इन नेपाल, नामचा बारवा इज इन इंडिया। सो आप देख सकते हैं कि हमारे नोट्स में से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। सो द क्वेश्चन वाज which of the following peaks are situated in India? So we see Namcha Barwa is in India. After that, Kamet is also in India. So the right option of this question will be 2 and 3. Dholagiri and Makalu are both the peaks in Nepal. Now the next question is which one of the following state capital is closest to equator? Now you can see this question is directly from map. The question is simply that which capital of the state is close to the इक्वेटर। नाउ यू कैन सी इक्वेटर जा रहा है आपका नीचे से। सो आपका ऑप्शन है गोवा, गोवा की कैपिटल है पणजी। सो इक्वेटर के पास कौन सा आ रहा है आपका? गोवा का। उसके बाद आपका उड़ीसा भी ऑप्शन में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल है उसका ऑप्शन में है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे क्लोजली कौन सा है आपका? गोवा का। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी पणजी, which is the capital of state Goa. Now the next question is which of the following Ramsar wetland sites is not situated in any of the UT of India? The first option is Hokera wetland, option B is Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary, option C is Somoriri Lake and option D is Wooler Lake. Now you can see this question is directly from our notes. Here you can check the map. यहाँ आपको देखने को मिल रहा है जैसे the first one was Hokera. Hokera is in Jammu and Kashmir. The next one is Wooler Lake, which is also in Jammu Kashmir. The next is Point Calimere and Wildlife and Bird Sanctuary, which is in Tamil Nadu. So the right answer of this question will be option B, because the question is which of the following Ramsar wetland sites is not situated in any of the Union Territories of India? Hokera wetland is in Jammu and Kashmir, Somoriri is in Ladakh, Wooler Lake is also in Jammu and Kashmir. So the Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary is in Tamil Nadu. Now the next question is which statement is not correct with reference to Andaman and Nicobar Island? Option A, climate is humid tropical coastal climate. Option B, maximum rainfall occurs between March and April. Option C, Andaman and Nicobar Islands are separated by 10-degree channel which is 150 km wide. And option D is islands are inhabited by Negrito tribes. Now you can see this is the direct from our sources about Andaman and Nicobar Islands. The question is 10-degree channels is separating Andamans and अंडमान आर सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाय 10-degree चैनल। उसके बाद ये आपके सारे डंकन पैसेज किस किस को सेपरेट करता है? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को। उसके बाद ट्राइब्स के बारे में, हियर इज द ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है। द क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? The climate is humid tropical coastal climate. The option is correct. But maximum rainfall occurs between March and April. This option is not correct. Andaman and Nicobar Islands are separated by 10-degree channel, which is 150 kilometer wide. The option is right. As we seen in the notes that Andaman and Nicobar Islands are separated by 10-degree channels. Now next option is islands are inhabited by Negrito tribes. So the right answer of this question will be option B, because maximum rainfall कब होगी? जब आपका मानसून आएगा, that is in May. Now the next question is in which among the following states in India the sun rays are never perpendicular? Option A is Bihar, option 2 Chhattisgarh, option 3 Manipur, option 4 is Rajasthan. Select the answers using the code given below. Now what is the question? In which among the following states in India the sun rays are never perpendicular? This question is also from our sources. Direct map से question आया आपका। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बिहार इज इन नॉर्थवर्ड साइड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
and Manipur is also on the northern side of Tropic of Cancer. So the आपकी डायरेक्ट सनरेज होगी जो आपकी, वो कहाँ पे होंगी आपकी? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बिहार एंड मणिपुर. सनरेज आर नेवर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कहाँ पे होगी? जहां पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कर रहा है, आपका पास कर रहा है, दैट इज छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1 and 3. You have seen that this question is directly from the map. Now next question is, which one of the following Indian state has the longest coastline? Now the question is, the longest coastline किसकी है? तमिलनाडु, गुजरात. So you can see this is directly from the notes that largest coastline किसकी है आपकी? गुजरात की. So the right answer of this question will be option B. Which one of the following Indian state has the longest coastline? So option B will be the right answer. Now next question is, which one of the following sets of states shares boundary with Telangana? Now the next question is कि तेलंगाना स्टेट के साथ कौन कौन सी स्टेट्स आपकी बाउंड्री शेयर कर रही हैं? ये भी क्वेश्चन देखा हमने डायरेक्ट सोर्स से है, हमारा नोट्स में से हमने देखा, मैप में से डायरेक्ट क्वेश्चन है. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, कौन कौन से होंगे हमारे? छत्तीसगढ़ होगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. So the option D will be the right answer because Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra sharing boundary with Telangana. Now the next question is, the Tropic of Cancer passes through how many coastal and landlocked states of India respectively? Now you can see this is directly from the map question. You will see that Gujarat is a coastal country. उसके बाद वेस्ट बंगाल coastal है. After that आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा एंड मणिपुर. नाउ कोस्टल कंट्रीज कितनी होगी आपकी? 1 इज गुजरात, द सेकंड इज वेस्ट बंगाल एंड द लेफ्ट कौन कौन सी बची आपकी? राजस्थान फर्स्ट, MP 2, छत्तीसगढ़ थर्ड, झारखंड फोर्थ एंड त्रिपुरा फिफ्थ, मणिपुर इज सिक्स्थ. सो दीज आर लैंडलॉक्ड. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, there is 2 coastal countries and 6 landlocked countries. So you can see this question is directly from the maps. आपने देखा कि कितने क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं आपके? डायरेक्टली मैप से. नाउ द नेक्स्ट इज, अन्ना सागर लेक इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम लेक, इन विच स्टेट? अन्ना सागर लेक, ऑप्शन इज A is Gujarat, option B is Uttarakhand, option C is Rajasthan and option D is Karnataka. So the right answer of this question will be C, Rajasthan. As you can see that यहाँ पे important lakes का मैप है. So this question is directly from the map कि आपकी कौन कौन सी important lakes हैं and किस state में है आपकी. So अन्ना सागर is in Rajasthan. Which one among the following states has the longest extension in north-south direction? अब सिंपली पूछा गया है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक्सटेंशन सबसे ज्यादा किस स्टेट की है? सो द ऑप्शन ए इज झारखंड, ऑप्शन बी इज तेलंगाना, ऑप्शन सी इज ओडिशा एंड डी इज छत्तीसगढ़. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी छत्तीसगढ़. एज यू कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम द मैप दैट नॉर्थवर्ड टू साउथवर्ड एक्सटेंशन सबसे ज्यादा किसकी है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी छत्तीसगढ़. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is a part of Deccan Plateau? Now the question is from Deccan Plateau. Option A Aravalli Hills, B Karbi Anglong Hills, C is Shivalik Hills and D is Vindhyan Hills. Now we can see that this is the directly question from notes. The question is, which one of the following is a part of Deccan Plateau? So here an extension of this is also seen in the northeast in the form of Shillong and Karbi Anglong Plateau. So this is directly from the notes. Peninsular Plateau. So the question was, which one of the following is a part of Deccan Plateau? So the right answer of this question will be option B, Karbi Anglong Hills. Now in India, next question is, in India, rigid and stable elevated lands, denuded rocks and series of scarps are the features of which of the following? Now option A is Northern Mountains, option B is Peninsular Plateau, option C is Northern Plains and D is Coastal Plains. Now you can see that this is directly from the notes on the same page, that peninsular India. So we seen in the questions basically क्या है वो और किस एरिया में पाए जा रहे हैं, that is Deccan Plateau. So the right answer of this question will be Peninsular Plateau. In India, rigid and stable elevated lands, denuded rocks and series of scarps are the features of which of the following? So the right answer is option B, that is Peninsular Plateau. After that, again the question is from Andaman and Nicobar Islands.
Mount Thulia is an important mountain peak of Andaman and Nicobar Island. It is located in. Now they have asked about कि वो कहाँ पे पाई जा रही है. The first is A, North Andaman, B, Middle Andaman, and C, South Andaman, D is Great Nicobar. So we have seen from, so here is all the information about islands. Andaman are separated, all the information about Andaman and Nicobar. So now the highest peak of the Andaman and Nicobar Island is Saddle Peak, located in North Andaman. Like that, Mount Thulier is an important mountain peak which is in which part of the Andaman and Nicobar? Is in Great Nicobar Island. So the right option of this question will be option D. So you can see this is directly from the notes. Here is list of major waterfalls. Dudhsagar is in Goa. After that, आपका था Barkana is in Karnataka. उसके बाद Duduma is in. So the right answer of this question will be Kiliyur is in, Barkana is in Karnataka, Dudhsagar is in Goa, Duduma is in Odisha, and Kiliyur is in Tamil Nadu. So option A का हो जाएगा आपका 3. Now the next is Duduma is in, C का हो जाएगा आपका 2. So the right option of this question will be option B. Clear? Now next is, in which one of the following state UT is the lake Somgo located? Now question is again from the lake. We have seen the map of the lake. मैप देखा हमने लेक्स का, वहां पे जो भी आपकी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं और किस किस स्टेट में है वो हमने देखा. सो 47 आंसर. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी इज द लेक सोमगो लोकेटेड? ऑप्शन ए इज लद्दाख, ऑप्शन बी इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज सिक्किम, एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. लेक सोमगो इज इन Sikkim state. Now the next question is again from the lake. Rani told her friend that last year she did boating in 4 different lakes, namely Loktak, after that Barapani, Koleru, and Pulikat. Which of the following state did she visit? Now they have given us with lakes and asked about states. Now this is directly from the map. They asked about Loktak Lake, which is in Manipur. After that, they asked about Koleru and Pulikat. So the right answer of this question will be Loktak is in Manipur, Barapani is in Meghalaya, and Koleru is in Andhra Pradesh, and Pulikat is in Tamil Nadu. So option B will be the right answer of this question. Now the next question is, which one of the following is not a mountain peak of Andaman and Nicobar Islands? हमने लास्ट में देखा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. नोट्स में से सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे आपको दी गई है. नाउ उन्होंने पूछा है पीक्स के बारे में कि कौन सी पीक आपकी जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में नहीं है. सो सैडल पीक हमने देखा, सैडल पीक इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. माउंट थुलियर इज ऑल्सो इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. माउंट डियावोलो इज ऑल्सो इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. Lhotse Peak is not in Andaman and Nicobar Islands. So the right answer of this question will be Lhotse Peak. So this is from my side. Now next हम आगे क्वेश्चन जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो साथ साथ में करते चलेंगे और इंफॉर्मेशन गैदर करते चलेंगे साथ साथ में. और ये जो हमने क्वेश्चंस करे ये आपके इंपॉर्टेंट है आने वाले NDA 1 एंड CDS 1 2025 के लिए. थैंक यू.